மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் ராதாகிருஷ்ணன் கிரிராஜன் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். श्री एस कल्याण सुंदरम. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் சுந்தரராஜன் கல்யாண சுந்தரம் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்றவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றேன் என்றும் விழுமிய முழுமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். श्री KRN राजेश कुमार. மாநிலங்களவையின் உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் KRN ராஜேஷ் குமார் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் என்றும் விழுமிய முறைமையுடன் உறுதி கூறுகிறேன். श्री CV षणमुगम. மாநிலவையின் உறுப்பினராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கும் CV சண்முகம் என்னும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பெற்றதான இந்திய அரசியல் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் இறையாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் உறுதியாக பற்றி நிற்பேன் என்றும் நான் இப்போது ஏற்கவிருக்கும் கடமையினை நேர்மையாக நிறைவேற்றேன் என்றும் கடவுளின் பெயரால் ஆணையிட்டு கூறுகிறேன். उत्तर प्रदेश श्री जावेद अली खान. मैं जावेद अली खान जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कपिल सिब्बल. I, Kapil Sibal, having been nominated a member of the Council of States, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Nominated Shri Ilaya Raja. He has not come. श्री V विजेंद्र प्रसाद. I, V. Vijayendra Prasad, having been nominated a member of the Council of States,
do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind. Please. Be seated, Vijendraji, and then put your signature. श्रीमती पिलावुल्ला कंडी तेखे परमबिल उषा P.T. Usha. Honorable members, while taking the oath, one should read the prescribed form. Any deviation will make the oath invalid. I don't want to name anybody. One of the member has to take again today the oath because of such deviation. Other things and all what people are saying other than this will not be part of the record, one. And secondly, it will invalidate your oath. If somebody questions, then it will be a problem also. Please keep this in mind and also follow my advice. Members can come here, take oath, sit, sign the register, and then offer namaskara and go back to the respective seats. Even going around the chairman because of COVID only. Otherwise, I have no problem. As I told earlier, one can meet afterwards and then greet and also spend time with other, including the leaders, etc. This practice has to be followed by all. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Kishore Kumar Mohanty, Sri Robert Cushing and Sri K. Veerappan, former members of this House, and Sri Pandit Shivakumar Sharma, a legendary Hindustani classical musician and santoor player. Sri Kishore Kumar Mohanty passed away on the 30th December 21 at the age of 63 years. Sri Kishore Kumar Mohanty was born in Jharsuguda district in Odisha in April 1958. An advocate by profession, Sri Mohanty worked assiduously for the upliftment of the poor and downtrodden sections of society and took a keen interest in developmental work in his area. He served as the municipal councillor and also as the chairman of Jharsuguda Municipal Council in 1984 and 1992 respectively. Sri Mohanty started his legislative career as a member of the Odisha Legislative Assembly in the year 1990 and was serving for the fourth term in that assembly at the time of his sad demise. He also served as the Speaker of the Odisha Legislative Assembly from 2008 to 2009. Sri Kishore Kumar Mohanty represented the state of Odisha in this House from August 2000 to Afghanistan on 18th of June 2022, resulting in loss of 2 innocent lives. Honorable members, as you might also be aware, on 22nd June 2022, a massive earthquake struck northeastern Afghanistan, triggering a landslide which resulted in huge loss of lives and damage to property. In the incident, 1,100 persons reportedly lost their lives. 2,000 were injured and almost 10,000 have been rendered homeless. The earthquake has been termed as the deadliest earthquake in Afghanistan since 1998. Given the background of our special relationship with Afghan people, as an immediate measure, Government of India has dispatched 27 tons of relief assistance for distribution in the earthquake-affected region. The loss of precious lives and extensive damage to property in this tragic incidents are indeed painful and unfortunate. This House strongly condemns the act of terrorism committed by the terrorists in Nigeria and Afghanistan and express its heartfelt condolences as well as deep sympathy and sorrow on the losses suffered by the people of these countries and reiterates India's stand of solidarity with them. I request members to raise in their places and observe silence to mark as a respect to the memory of these people who lost their lives.
Please. I have to, please, let me come. Wait, please. Please. Nay, and there is something like that, it has to be brought to the notice, and then I don't know how the Secretariat has missed it. Please see to it that that is taken up. I have to inform members that I have received a communication from the Minister of Parliamentary Affairs informing me that Sri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Textiles, have been appointed the Leader of the House in Rajya Sabha by the Honorable Prime Minister. Thus, respected Deputy Chairman, I'll come back after I complete my listing. Please. Harivansh ji, Minister of Parliamentary Affairs, Prahlad ji, Leader of the House, Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, Sri Mallikarjun Kharge ji, respected ministers and honorable members of the House. I extend a warm welcome to all of you to this monsoon session of the House with 18 sittings beginning today. We are all coming together after over 3 months since the budget session that concluded on 7th of April this year. I have always cherished such coming together in our collective quest for doing our bit for making India of the dreams and aspirations of 140 crore people. Such a coming together this time is of particular significance for me as it is the last such privilege for me. Since my assumption of office 5 years ago, we have so far gathered together for 13 full sessions, and this is the 14th such session. This journey of 5 years has been a quite learning experience for me. Dealing with about 245 members of this August House from over 30 political parties with different minds, inclinations, and political ideologies is quite revealing and even a testing experience. I try to do the best of my ability to draw the best out of all of you, and as a corrective effort, since the underlying unifying force was the interest of the nation and fulfill the aspirations of the people and also the federal interest of the states, that this Council of States was required to subserve. The credit for the positives, if any, would go to all of you. And if my best efforts, in spite of that, if is short of expectations, I would not hesitate to take the responsibility for the same. I would like to give you all a detailed factual account of perspective of the functioning of this August House during the last 5 years on 10th of next month, my last day in office. I would, however, like to mention one statistics today for all of you to think over. During the last 13 sessions, 141 of the 248 scheduled full sittings, accounting to 57% of the total sittings, were disrupted partly or fully. All of you would agree that this could have been better given our mission for the nation. And we must always try to fulfill the mission with passion for the sake of the nation. Better late than never. It is time to be different and better. I would like to remind all of you that this is the last session in the 75th year of our hard-fought independence and is being celebrated across the country. As in the case of all the last 13 sessions that I preside over, I would like to fervently appeal to all of you to give out your best performance to make this session a memorable one, particularly in the context of its significance. I expect this session to set the right tone for functioning of this August House over the next 25 years of Amrit Kal, which is critical period to take India to entirely new plane by the time our nation rejoices the centenary of its independence. I would expect all of you to be propelled by the spirit of New India 100 so that our nation makes up for the missed time and opportunities. This spirit also shall also inspire the other stakeholders, particularly so as our nation is set to become the most populous in the world, or next most populous in the world. I said there is some issue about overtaking China and all. This is not the right this thing, but Amrit Kal as projected by the United Nations Population Division last week. That's what was mentioned there. Our population will increase by about 20 crores when independent India turns 100 years. The challenges and opportunities that come with it need to be addressed with a
with a long-term vision and imagination. Please, nothing is going to happen, Ramesh ji. Please, you are an experienced man. Really, I can assure you, in spite of temperature rising, nothing is going to happen for another 5 minutes. Right? More members of parliament need to rise to the occasion. As you know, the parliament functions throughout the year. Its committees, please, I have to felicitate the new members also. Please, you know the parliament functions throughout the year through the committees. During the please, the inter-session period, since the last budget session, 7 of the 8 department-related department standing committees of Rajya Sabha have held it. Please, Pramod ji, wait here, please. Wait. Rajita ji, wait. This is not, I am not going to allow such intervention in between. You know better, and this will not go on record also. There has been an accord in that regard also. I am happy. कब बोलना ये मेरा ऊपर आप छोड़ दीजिए. I am happy to share the average duration of the sittings have been over 2 hours and average attendance being over 46%. I am happy to note improving the performance of these committees. The Committee on Education has cracked highest average duration of 03 hours, 22 minutes for 5 of its meetings. The Committee on Personal Place, nothing goes on record. Nothing is seen, shown, or recorded, or reported. The Law and Justice, 2 hours and 15 minutes. The Committee on Transport, Tourism and Culture, besides Education, Service and Technology, have reported average attendance of your own committees, while the re-elected seniors provides continuity, the new members bring in perspective and dynamism. We also would like to welcome 4 nominated members, Srimati P.T. Usha, Sri Ilaya Raja, Sri Vijayendra Prasad, Sri Virendra Hegde. They symbolize the steady pursuit of breaking the barriers. We invite the newly nominated members to this house. All of them are eminent in their respective fields. These are also qualities that are expected to mark the functioning of this august house. All sections should collectively endeavor. My dear members, it is immense pride for all of us to know that our country created history by reaching the milestones of administering 200 crore COVID-19 vaccines across the country. This amounts to 97% of the first dose coverage and 90% of the adult population receiving both the doses. 200 crore COVID-19 vaccinations across the country is a remarkable achievement. This remarkable achievement, House placed on record its appreciation to all the stakeholders, including the vaccine makers and producers, the central and state government, the frontline workers, and above all the people. As a continuous measure, this session will also be held in COVID protocol. So, this is being followed since 257. I urge all of you to enable a safe, productive monsoon session of this August House. This is not done. This is not acceptable. आप लोग मगर मेरा कहना है जो महत्वपूर्ण विषय है जो सदन के सामने लाया, जो कोविड का 75 जो दिनों की ये देश के व्यावसायिक जनसंख्या के मुफ्त प्रिकॉशन डोज लगने वाले अभियान भी प्रारंभ हो चुका है। आप सब लोग उसको मदद करिए, इसमें शामिल हो जाइए। जॉइन दी कैंपेन फॉर वैक्सीनेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। As the papers to be laid on the table, Secretary General. Message from Lok Sabha and English. Message from Lok Sabha. During the 256th session of Rajya Sabha and assented to by the President. Message from Lok Sabha. With your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on 15th March 22 adopted a motion recommending to the Rajya Sabha that Rajya Sabha to elect 3 members of Rajya Sabha in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote to the Joint Committee on
offices of profit and the vacancies caused by the retirement of Shri Vijay Sai Reddy, MP, Dr. Sasmit Patra, MP, Shri Mahesh Poddar, MP, from Rajya Sabha. No slogans. To Lok Sabha. There is nothing will go on record. Nothing shall be shown, seen, reported. I am to inform that the above message was received on 15th of March 22 during the previous session and was not reported to the House in that session as requested by Lok Sabha. As the term of office of the members mentioned therein was yet to expire. Honorable, please, one minute. The panel of chairman, please. एक मिनट का. The panel of vice chairman has been reconstituted with Sri Bhunesh Karita, Mrs. Indu Bala Goswami, Dr. L. Hanumantaya, Sri Tiruchi Siva, Sri Vijay Sai Reddy, and Dr. Sasmit Patra. I have to inform members, I have received letter from Sri Subhash Chandra Singh, member representing the state of Odisha, and Dr. Manik Saha, member representing the state of Tripura, resigning their seats in Rajya Sabha. I have accepted the resignation of Sri Subhash Chandra Singh with effect from 21st April 2022 and the resignation of Dr. Manik Saha with effect from 4th of July 2022. As some people have come determined not to allow the House to function and also enable the members to go and vote in the presidential election, I am adjourning the House for the day. We'll meet tomorrow.
नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 10 बजे से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है और 5 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। हम आपको ये भी बता दें कि सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मतदान कर चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत विपक्ष के कई बड़े नेता भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालने पहुंचे। देश के शीर्ष संवैधानिक पद के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आमने सामने हैं। हम बता दें कि द्रौपदी मुर्मू बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए की तरफ से और यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। हम लगातार अपडेट लेते रहेंगे। हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। हम बता दें कि संसद भवन में ये मतदान प्रक्रिया प्रथम तल पर स्थित कमरा नंबर 63 में हो रही है और राज्यों की राजधानियों में भी वोट डाले जा रहे हैं। जी हां, सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये आज एक तरीके से उत्सव का सा माहौल, ये कमरा नंबर 63 है जहां पर मतदान डाले जा रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया, प्रधानमंत्री मतदान कर चुके हैं। इसके अलावा पक्ष विपक्ष के तमाम माननीय सांसद और नेतागण पहुंच रहे हैं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। मनोज जी, ये सीधी तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री के साथ जेपी नड्डा आप देख सकते हैं, प्रहलाद जोशी जी हैं, वो भी साथ में हैं। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री पहुंचे कमरा नंबर 63 में और राष्ट्रपति चुनाव की इस मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बने और उन्होंने अपना वोट डाला। जी बिल्कुल प्रतिबिंब जी, राष्ट्रपति का चुनाव है और लोकतंत्र में जो चुनाव है वो हमारे लिए एक उत्सव की तरह होता है और उत्सव का ये नज़ारा सुबह से ही देखने को मिल रहा है। संसद भवन परिसर में सभी दलों के सांसद बढ़ चढ़कर मतदान में भाग ले रहे हैं और राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव की एक तरह से प्रक्रिया देश में शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान किया जा रहा है और उपराष्ट्रपति पद के लिए जो एनडीए उम्मीदवार हैं वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिहाज से संसद का जो मानसून सत्र है खासा महत्वपूर्ण है। प्रतिबिंब जी जी हाँ, और ये देख सकते हैं आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री इस चुनाव की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हुए और कमरा नंबर 63 की ये तस्वीरें। और यहाँ पर अभी कुछ क्षणों में प्रधानमंत्री अपना वोट भी डालेंगे। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पहुंचे थे कुछ समय पूर्व मतदान करने के लिए। इसके अलावा अन्य विशिष्ट जन, माननीय सांसद लगातार पहुंच रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी मनोज वर्मा कह रहे हैं, उत्सव का सा माहौल रूम नंबर 63 के सामने नजर आ रहा है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं खास मेहमान संदीप फुकन, वरिष्ठ पत्रकार है और संसद की कार्रवाई को बहुत करीने से जानते हैं, पहचानते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। संदीप जी, ये प्रक्रिया जो है कितने महत्वपूर्ण लग रही है और जो उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें गृह मंत्री नजर आ रहे हैं अमित शाह, वो भी कमरा नंबर 63 पहुंचे और उन्होंने भी राष्ट्रपति चुनाव की इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी ली और उन्होंने वोट डाला। संदीप जी। बिल्कुल प्रतिबिंब जी, देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, ये सबसे बड़े संवैधानिक पद है जो हम लोग भारत को एक गणतंत्र बोलते हैं कि ये इसी के ज़रिए राष्ट्रपति के जो पद है उसी के ज़रिए हम एक गणतंत्र बनते हैं। एक ये सारे जो ये खासियत यही है हमारे लोकतंत्र की, देखिए कि सारे पक्ष विपक्ष सब एक साथ आके उत्साह से दे रहे हैं। भले ही ये एक राजनीतिक लड़ाई है, राष्ट्रपति जी का पद जो है वो राजनीति से ऊपर उठ के है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं कि प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट भी संसद का एक हिस्सा होते हैं। और भले ही वो जो वो है राइवल्स हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने फील्ड किया है और यशवंत सिन्हा जी जिसको कि विपक्ष ने फील्ड किया है,
इनमें आइडियोलॉजिकल मतभेद ज़रूर है, लेकिन देखिए कितने सुचारू रूप से अभी मतदान हो रहा है। और सिर्फ संसद में ही नहीं, सारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में हो रहे हैं। टोटल 31, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 31 पोलिंग स्टेशंस हैं। सारे असेंबलीज़ में ये वोटिंग होंगी, 5 बजे तक चलेंगे। एमएलएज और एमपीज़ वोट देंगे, उसके बाद फिर बाद की जो प्रोसेस है यहाँ आके काउंटिंग होंगे। और राज्यसभा के जो सेक्रेटरी जनरल है मिस्टर मोदी, पीसी मोदी, वो रिटर्निंग ऑफिसर है इस चुनाव के। जी प्रतिबिंब जी। और अगर बात करें रिटर्निंग ऑफिसर, ये भी जो है बारी के साथ बदलते रहते हैं। पिछली बार के राष्ट्रपति चुनाव की बात करें जी तो जी, लोकसभा के हाँ, ये महासचिव ऑल्टरनेट होते हैं कि वो लोकसभा के महासचिव और ये राज्यसभा के महासचिव अभी हैं फिलहाल, और वो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उनकी देखरेख में ये चुनाव प्रक्रिया संपन्न होंगे। हालांकि और एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये भी है, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक राजनीतिक लड़ाई ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई व्हिप नहीं होता। ये अपने मन से दे सकते हैं, पार्टी के हिसाब से दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई व्हिप, कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अगर कोई जैसे हमने देखा ऑपोजिशन के 17 पार्टीज़ ने नॉमिनेट किया था यशवंत सिन्हा जी को, लेकिन जो शिवसेना है वो फिलहाल कुछ दिक्कतें उनकी आ रही हैं और वो बढ़ चुके हैं। शिवसेना के एमपीज़, एमएलएज तो पहले ही बोल चुके थे कि हम द्रौपदी मुर्मू जी को देंगे, लेकिन एमपीज़ ने डिसाइड नहीं किया था। वो लोग 16 एमपी जाके उद्धव ठाकरे से मिले, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको दोबारा विचार करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आते हैं, औरत है, और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उद्धव ठाकरे ने बेशक पहले बोला था कि वो ऑपोजिशन के साथ हैं, लेकिन वो वापस उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, वो एनडीए को समर्थन करेंगे जी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो अब एनडीए को समर्थन कर रहे हैं जी। बिल्कुल। प्रतिबिंब जी, जैसा अभी संदीप जी ने बताया, अगर बात की जाए, ये ठीक है कि राष्ट्रपति चुनाव में जनता की सीधे भागीदारी नहीं होती है, लेकिन जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद, सदस्य और विधायक, वो इसमें मतदान करते हैं। जाहिर तौर पर है, लेकिन अभी तक मतदान कितना हुआ है? संसद भवन परिसर में हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन जी इस समय मौजूद हैं। सीधे आपको लिए चलता हूं अखिलेश सुमन।